Namaste everyone, this is Sagar sir from Colonel's Academy, and now 10th standard students will be starting with is geography actual syllabus. हमने जो previous video में देखा that was basics of geography. Now we'll be studying the actual chapters of geography. Now the first chapter of your geography is just an interaction between the students and the teacher. It is like a field trip. So avoiding that chapter as of now, we are jumping on to the second chapter that is going to teach us about India and Brazil, location and extent. 10th standard students पूरा syllabus में हम geography में यही चीज़ देखने वाले हैं, the comparison between India and Brazil. Why these two countries? Because these two countries are large in size, they have good amount of population, they both are developing economies. So बहुत सारी पैरामीटर्स जो है ना हमारे और ब्राज़ील के एक जैसे हैं. That is why we are comparing India with Brazil. So let us start with this chapter, location and extent. Also, one more thing 10th standard students, please read the textbook that we have given you online, as well as once see the video of Navneet app that we have given it to you. Okay, so let's start. So now we'll be seeing chapter number 2, location and extent, दोनों countries का, India and Brazil. So to start with the chapters, we have been giving in the first page उन लोगों ने clues दिया है to identify the countries. So the first country is the second largest populated country in the world. First clue is more than enough for us to understand कि ये किस country के बारे में बात हो रहा है. Secondly, it is famous for spices. Our country definitely, जिसका climate बहुत बहुत अच्छा है for growing spices, and cricket is a popular sport here. So definitely it is none other than our own country, India. Second clue that they have given for the next country is famous for Samba dance. Samba dance is very famous in this country. It is known as the coffee pot of the world because it grows amazing coffee. And third, football is a popular sport here. So definitely we know this country as well. It is Brazil. So India and Brazil is what we'll be studying in this chapter onwards. This is the beautiful picture of India. Capital, New Delhi. This is the amazing photograph of a statue in Brazil, Christ the Redeemer. Now, first of all, introduction about India. So the name of our country is Republic of India. रिपब्लिक इसीलिए बिकॉज इंडिया में इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन विच इज़ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट, एंड ये कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक ने बनाया है बराबर. सो इट इज़ कॉल्ड एज रिपब्लिक ऑफ इंडिया. दैट इज़ वाई वी सेलिब्रेट आवर रिपब्लिक डे ऑन 26 January every year to honor the constitution. Name of the capital of our country is New Delhi. Definitely India has had old capitals like Kolkata once upon a time was a capital. Then in the olden times, जब अशोका एंड ऑल रूल करते थे तब मगध भी उनका कैपिटल होता था साम्राज्य का. बट एज ऑफ नाउ द कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली. सो दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एज यू कैन सी हियर इन द सेंटर ऑलमोस्ट इट इज द हार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज न्यू दिल्ली. दिस इज अमेजिंग फोटोग्राफ्स ऑफ दिल्ली, डियर स्टूडेंट्स. This is the Rashtrapati Bhavan. This is the Humayun's tomb. This is the Swaminarayan Mandir complex of Delhi. This is of course the world famous India Gate. And this is the Lotus Temple of Delhi of Baha'i religion. Now moving on to location, extent and boundaries. India is located in the northern and the eastern hemispheres of the earth. If you have seen the previous video properly and you have understood it well, ये explain करने के लिए मुझे बहुत easy होगा. Northern and the eastern hemisphere, dear students. It is located in the southern part of the Asian continent. So explaining both the points now, you have the world map here. As you can see, this is the equator. So India equator के ऊपर है. So India is in the northern hemisphere. This is our prime meridian here. You can see this line passing from here, longitude passing from here. This is your prime meridian. So India is located to the right hand side of prime meridian, eastern side of prime meridian. So that is why this is the eastern hemisphere.
So India is located in the eastern hemisphere and the northern hemisphere. That is how India's position is. As you can see, इंडिया का जोग्राफिकल लोकेशन भी बहुत अच्छा है. इंडिया के नॉर्थ में पूरा एशिया आता है. इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन के राइट में इट इज़ ऑस्ट्रेलिया, एंड लेफ्ट हैंड साइड वी हैव द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट एंड द टॉप लेफ्ट इज यूरोपियन कॉन्टिनेंट. सो यू नो व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इंडियाज पोजिशन, सो अगर आपको एशिया से अफ्रीका जाना है तो यू हैव टू क्रॉस इंडिया, यूरोप से ऑस्ट्रेलिया जाना है तो यू हैव टू क्रॉस इंडिया. सो इंडिया का जोग्राफिकल लोकेशन इज सेंट्रल. अच्छा, one more point we have seen is it is located in the southern part of the Asian continent. So this is Asia, so it is located in the southern part of the Asia. And India के आजू बाजू के countries including India is called as Indian subcontinent, in which we have 7 countries: Pakistan, Bangladesh, Nepal, Bhutan, Maldives, Sri Lanka and India. So these 7 countries are called as Indian subcontinent. Now fill in the values in degrees. We are going to measure India's latitudinal and longitudinal extent. So to understand that, I have purposely left the blanks so that you can tell me with the help of this map. Now this map you can see. Now of course if you remember, equator India के नीचे है. So equator से हम पहले ये baseline हमारा मापेंगे. So that is 8 degree 4 minutes north latitude. यहाँ से इंडिया का एक्सपेंशन चालू होता है, नॉर्थ साउथ एक्सपेंशन डियर. यहाँ से चालू होते हुए यहाँ पे ख़त्म होता है 37 डिग्रीज 6 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड. देन लॉन्गिट्यूड मेजर करने के लिए, इफ़ यू रिमेंबर वेरी वेल, प्राइम मेरिडियन वाज ऑन दिस साइड. सो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में इंडिया आता है. सो हम इंडिया का मेजरमेंट, लॉन्जिट्यूडनल मेजरमेंट ऐसे बराबर मेजर करेंगे. सो इंडिया का मेजरमेंट चालू होता है यहाँ से, गुजरात से. दैट इज 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स, एंड इट एंड्स हियर 97 डिग्रीज 25 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड. सो दैट इज द एक्सपेंस ऑफ इंडिया. नाउ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज इंदिरा पॉइंट. नाउ कैन यू सी द मेन लैंड इंडिया. सी, इसको बोला जाता है मेन लैंड इंडिया. इंडिया के राइट में हमारा जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है वो कन्याकुमारी से थोड़ा और नीचे है. सो कैन यू सी दिस ब्लू डॉटेड लाइन्स हियर? यस, दैट इज इंदिरा पॉइंट. इट इज लोकेटेड एट 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ पैरेलल. सो दिस इज इंदिरा पॉइंट. दिस इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. यहाँ पे लास्ट इज इंदिरा पॉइंट. इसे इंदिरा पॉइंट कहा गया है फॉर और इन मेमोरी ऑफ इंदिरा गांधी, आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जिन्होंने यहाँ पे विज़िट किया था. और जब उन्होंने विज़िट किया था तब उनके रिस्पेक्ट में इस विलेज का नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया है. पॉपुलेशन इज़ वेरी लेस हियर. देर आर अप्रॉक्सीमेटली 200 पीपल लिविंग इन दिस एंटायर प्लेस. दिस इज़ द ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ इंदिरा पॉइंट. There is a lighthouse in the middle. Now, dear students, you will have to fill in this table. Observe the map of India and fill in the table. So directions east, west, north and south में इंडिया के कौन से कंट्रीज या सीज या ओशंस आते हैं, that is what we'll be seeing here. So let's see in this map. So when you're talking about India, तो इंडिया के नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में देर आर 3 कंट्रीज. एज यू कैन सी, इट इज़ नेपाल, भूटान एंड चाइना. देन इंडिया के वेस्ट में, वेस्ट इज वेयर दिस साइड. सो इंडिया के वेस्ट में आते हैं अरेबियन सी, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान. सी, अफगानिस्तान इज कनेक्टेड टू इंडिया एट अ वेरी स्मॉल पॉइंट हियर. इट टचेज इंडिया स्लाइटली. That is the west of India. Then to the south of India, you can see is the Indian Ocean, Sri Lanka. This is Sri Lanka here. Now this island, which has not been named as Maldives, which is a very good friend of India, and in Andaman and Nicobar Islands के right में इस side पे आता है Indonesia. So Indian Ocean, Sri Lanka,
Maldives and Indonesia, these are the countries to the south of India. Now remaining is east part of India. So east part of India we are having is Bangladesh, Myanmar and Bay of Bengal. These are the three things located to the eastern part of India. This is the introduction of India. Now what we'll be seeing is of Brazil. So name of the country is Federative Republic of Brazil. Now dear students, फेडरेशन का मतलब होता है कि ब्राज़ील में अलग अलग स्टेट्स है जैसे इंडिया में है, और सब जगह पे स्टेट्स का गवर्नमेंट है जैसे इंडिया में भी है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी है. सो जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेडरेशन. सो इवन इंडिया इज़ अ फेडरेशन. दिस इज़ द सिंबल ऑफ ब्राज़ील. नेम ऑफ द ब्राज़ील का कैपिटल इज़ ब्राज़ीलिया. This is the entire country of Brazil. It is 5th largest country in the world. India is 7th largest country in the world by area, and Brazil is 5th largest country in the world by area. This is the capital of Brazil, that is Brasilia. This is the amazing pictures of the capital city. Now, location, extent and boundaries. Some part of Brazil lies in the northern hemisphere, while most of it lies in the southern hemisphere. We'll definitely see it on a map. It also lies in the western hemisphere in the northern part of the South American continent. So this is how Brazil is located. Pay attention very carefully. This is the location of Brazil. So definitely we know the continents of the world. This is North America and this is South America. South America के north part में Brazil located है. Now if you see very carefully, equator के थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे Brazil है, and majority of the country is below the equator. So some part of the country is above the equator and majority of the country is below the equator. Then this is prime meridian. Brazil west of prime meridian में है. That is why it is in the western hemisphere. India is in the eastern hemisphere. India, you can see here is India. This is eastern hemisphere. This is western hemisphere. Divided by prime meridian. That is the location of Brazil. ये रहा Brazil in the continent of South America. It occupies majority of the continent as you can see. Find the extent of mainland Brazil from what to what degrees. Now can you see here, वो नॉर्थ में चालू होता है और साउथ में ख़त्म होता है क्योंकि उसका कुछ पार्ट नॉर्थ में आता है अबाउ द इक्वेटर, एंड इट इज़ इन द वेस्ट हेमिस्फीयर. सो एज यू कैन सी हियर, दिस इज़ अ मैप ऑफ ब्राज़ील. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, दिस इज़ 50 डिग्री वेस्ट, दिस इज़ 60 डिग्री वेस्ट, दिस इज़ 70 डिग्री वेस्ट. सो दिस मस्ट बी 40 डिग्री वेस्ट एंड दिस इज़ 30 डिग्री वेस्ट. सो अगर हम ब्राज़ील का बात करें तो ब्राज़ील चालू होता है 34 डिग्रीज 45 मिनट्स वेस्ट लॉन्गिट्यूड से, एंड ब्राज़ील एंड्स हियर, दैट इज़ 73 डिग्रीज. दिस इज़ 70 हियर यू कैन सी. So it is ending at 73 degrees 48 minutes west longitude. Now talking about the latitudes, you can see here this is the equator, this is the north of the equator. So this is in the northern hemisphere and this is in the southern hemisphere. So north में ब्राज़ील चालू होता है approximately इस latitude से, that is 5 degree 15 minutes north, and it ends here in the southern part, that is 33 degrees 45 minutes south. That is the extent of Brazil. Now same way जैसे हम लोगों ने इंडिया के लिए ये टेबल फिलअप किया था, सेम हम ब्राज़ील के लिए फिलअप करेंगे ये टेबल. इट इज़ मच ईजियर फॉर ब्राज़ील. सेम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट एंड साउथ. सो दिस इज Brazil. This is the South American continent. So we'll start with the eastern part first. You can see very nicely that east में Atlantic Ocean आता है. So it is Atlantic Ocean in the east, North Atlantic and South Atlantic Ocean. Then to the north of Brazil is the country French Guyana, Venezuela. These are the countries to the north part of Brazil, and Suriname. So 1, 2, 3, 4 countries in the northern part of Brazil. Then to the
western part of Brazil is Colombia, Peru, Bolivia, and some part of Paraguay. These are the countries to the western part of Brazil, and Argentina. Argentina is connecting Brazil in this part. So 1, 2, 3, 4, 5. 5 countries are connected to Brazil from the western side. Then to the southern part of Brazil is only one country, Uruguay. Now, among all the countries in South America, you can very well see only Chile and Ecuador. These are the only 2 countries which are not joining Brazil, which are not connected to Brazil. Rest all the countries are connected to Brazil. Then small, they have given us an introduction of historical background of India and historical background of Brazil. So India was under the British rule for almost 1.5 century, right from 1757 the Battle of Plassey, or I can go beyond 1740 Carnatic Wars. वहाँ से लेके 1740 से लेके ब्रिटिशर्स ने हम पे रूल किया है up till 1947. I would like to disagree with this. It is not 1.5 century dear, it is 2 centuries. 200 years Britishers have ruled us actually. British rule of India. India got its independence in the year 1947. Birth of India's freedom. 15th August 1947. This is how the news was printed in Times of India. Despite facing several problems, definitely India had to face several problems like 3 wars. Not exactly 3 wars, we have fought many wars. Indo-Pakistan War 1947, Operation Polo Hyderabad. If you remember 8th standard, हैदराबाद का किंग हमको इंडिपेंडेंस नहीं दे रहा था, हैदराबाद को इंटीग्रेट नहीं कर रहा था इंडिया से, निज़ाम ऑफ हैदराबाद. सो सरदार वल्लभ भाई पटेल, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्टार्टेड एन ऑपरेशन कॉल्ड एज ऑपरेशन पोलो. देन द गोवा लिबरेशन वॉर. गोवा पोर्चुगीज़ ने इंडिपेंडेंट नहीं किया था, सो गोवा को लिबरेट कराने के लिए पोर्चुगीज़ के साथ हमको वॉर करना पड़ा इन 1961, which was a small war. It lasted only for 2 or 3 days. Then Indo-China War 1962, Indo-Pakistan War 1965, which led to the death of our very beloved Prime Minister Lal Bahadur Shastri. Indo-Pakistan War once again in 1971, the famous war. Then the Kargil War, which was fought very recently, 20 years back, 1999. So we have fought many wars. फेमाइन सिचुएशन. इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री. इंडिया में फेमाइंस आते हैं एंड बहुत बुरा असर करते हैं. दिस इज़ हाउ द पीपल यूज टू स्टार्व. यू कैन सी दैट पर्सन इज हैविंग ओनली स्किन ऑन हिज बोन्स. एंड सिमिलर इशूज आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट स्टिल टुडे वी आर हियर फाइंडिंग सल्यूशन टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स. India is a major developing country of the world. To make it interesting, look at this graph. ये 2016 का ग्राफ है डेफिनेटली, बट इसमें आप देख सकते हैं कि हाउ इंडिया वॉज प्रोग्रेसिंग. म्यांमार, आइवरी कोस्ट, भूटान इज अ वेरी स्मॉल कंट्री. नाउ अमॉन्ग द मेजर कंट्रीज, इंडिया यू कैन सी इज ग्रोइंग एट द रेट ऑफ 7.5% GDP. दैट इज अमॉन्ग द फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट. सी इट इज़ गुड थिंग कि वर्ल्ड हमको एक मार्केट कंसिडर करता है और यहाँ पे सामान बेचने के लिए आता है. बट नाउ इट इज़ हाई टाइम कि इंडिया स्टार्ट्स सेलिंग टू अदर कंट्रीज. बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज़ पेस्ड अप. यू रिमेंबर 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री में हम लोगों ने देखा था 1991 में लिबरलाइजेशन आया था, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे एंड नरसिम्हा राव जी हमारे प्राइम मिनिस्टर थे. So India has taken steps time to time. Recently भी इंडिया ने कोरोना वायरस सिचुएशन में चाइना हमको ओवरटेक ना करे इसलिए भी न्यू रूल्स लाए हैं. दिस इज हाउ द टॉप 10 countries of the world look like. So now we are at 6th rank. In 2018 we were in 6th rank, but in 2020 we will be promoted to the 5th rank. Can you see here? United Kingdom $3.1 trillion, and India will be $3.3 trillion. The proportion of youth in India's population is high. One of the main driving factors of India is its youth.
Because this forms a major part of a working population, India is looked upon as a young country. See this graph now to understand this. वर्ल्ड में बराबर ये ग्राफ है वर्ल्ड का बाय एज. वर्ल्ड में यू कैन सी हियर 0 to 14 ईयर्स के लोग जो है ऑन एन एवरेज 26% है. ओल्ड एज जो है वो 9% है. चाइना में ओल्ड एज 12% पॉपुलेशन है, जबकि इंडिया में ओल्ड एज का पॉपुलेशन है 6%. नाउ 15 to 64 में वर्ल्ड का एवरेज है 65, चाइना का है 71. दैट इज़ वाई यू कैन अंडरस्टैंड वाई चाइना इज लीडिंग द वर्ल्ड राइट नाउ, बिकॉज चाइना का मेजॉरिटी पॉपुलेशन वर्किंग है. इसको हम वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं. 15 to 64 ये वाला एजुकेशन में है, दैट इज कॉल्ड एज दे आर चिल्ड्रन, दे आर डिपेंडेंट पॉपुलेशन. 65 above is also known as dependent population. So you can see here dear students कि majority इंडिया में young लोग हैं, that is 27%, which is the highest in the world. You are the youth of today, which is going to earn for tomorrow. That is how India is having one of the largest youth population of the world. Now we come across the last slide, historical background of Brazil. For more than 3 centuries, Brazil was under the Portuguese rule. See, this is the Portuguese Empire. You can see here, this is the original country of Portugal. Very small. And ये पोर्चुगीज ने कैप्चर किया था, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉलोनी उसका था ब्राज़ील. From 1930 to 1985, for more than half century, it was under a populist military government. See, Brazil got its independence later on, but then Brazil was, having lot of instability. So Brazil में 1930 से लेके 1985 तक, hardly elections होते थे, and majority of the times it was the military people who were ruling. So this is the military people who used to rule. It was called as the Janta government. It has overcome financial difficulties, global financial difficulties in late 20th century, and Brazil is seen as a contributor to the world economic growth and an important market in the future. So now you can see the biggest economies in the world by GDP and projected in 2019. So you can see definitely इस रेशियो में सबसे आगे और सबसे ज़्यादा जिसका रेशियो बढ़ रहा है वो है इंडिया 7.3%. So now बराबर ऐसा है GDPs and all, this was just an assumption actually. So India will be third according to the production of GDP. Brazil is little bit down, but Brazil definitely has less population as compared to India. So this is how India and Brazil का introduction is. We are also a part of a common group called as BRICS: Brazil, Russia, India, China and South Africa. These are the 5 countries: Brazil, Russia, India, China, South Africa is here, it is not colored. These are the leaders of the 5 countries. Chinese president, very famous nowadays in the world, that is Li Jinping. Then second is Vladimir Putin of Russia. Then this is Brazilian president. This is our Indian Prime Minister, Mr. Narendra Modi. And definitely the South African president, Mr. Jacob Zuma. This is how we stand in the world, exports and trade. So you can see exports of millions of dollars. So now China is ranking first in the world in exports. Second is US. This was 2017 ka graph. India ranks 14 and Brazil ranks 15. So we are almost together. But India has to, increase its ranking now. India and Brazil, may the friendship last longer. This is how India and Brazil have started their journey towards the from developing to developed country. Thanks a lot, dear students. This is Sagar Kanal from Kanal's Academy. Also, do not forget to read the textbook and once see the video on the Navneet app as well. Thanks a lot.